Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to solve problems of C programming. Okay. Our first program is simple interest program. Okay. जो हमारा पहला प्रोग्राम है क्या है? सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम. जैसे कि हमारा कोड है हैज़ इंक्लूड studio.h. Studio.h means to say standard input and output. Then after we write int main function. Then inside the curly bracket float p comma r comma t comma si. Then after we write semicolon. Okay. In next line printf inside the small bracket within inverted comma enter principal /n. /n is used for new lining in output. Okay. Then after small bracket will close, then semicolon. In new line scanf inside the small bracket within inverted comma %f. %f shows the float value. Then after comma and %v, then small bracket will close, then semicolon. Okay. In next line printf inside the small bracket within an inverted comma enter rate of interest, then /n, then our small bracket will close, then after semicolon. Okay. In new line scanf inside the small bracket within an inverted comma %f, then after comma and %r, then our small bracket will close, then semicolon. Okay. In next line printf inside the small bracket within inverted comma enter time, then /n, then our small bracket will close, then after semicolon. In new line scanf inside the small bracket within inverted comma %f, which represent the float value, then comma, then and %t, then after our small bracket will close, then semicolon. Okay. In new line, as we know that SI simple interest is equal to PRT divided by 100. Okay. In new line printf inside the small bracket within inverted comma simple interest is equal to %f comma SI. Then after our small bracket will close, then semicolon, then our curly bracket is closed. Okay. This is the program for the simple interest. Okay. Our output will come in simple interest program is इंटर प्रिंसिपल. मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000. इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5 है और इंटर टाइम 10 है. ठीक है. जब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे पी स्टार आर स्टार टी डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2500. ओके. This is the output for the simple interest program. Okay. Our next program is swapping of two number using third variable method. Okay. जैसे कि हमारा कोड है हैज़ इंक्लूड studio.h. studio.h means to say standard input and output header. Okay. Then after we write int main function inside the curly bracket int a equal to 10 comma b equal to 20 comma c, then semicolon. Printf inside the small bracket within inverted comma before swapping a equal to %d and b equal to %d, then /n, then comma a comma b, then our small bracket will close, then semicolon. ओके. देखिए ए सी इक्वल टू ए, असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए टू सी. मान लीजिए जो हमारा गिवन है ए इक्वल टू 10, तो हम ए की वैल्यू को किसको असाइन कर रहे हैं सी को.
तो सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, एंड असाइनिंग द वैल्यू ऑफ बी टू ए। तो हमारा बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 20 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए हो जाएगी। सी इक्वल टू 10 एंड ए इक्वल टू 20। ओके, देन आफ्टर बी इक्वल टू सी। अब इसमें क्या होगा, असाइनिंग द वैल्यू ऑफ सी टू बी। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आई है, सी इक्वल टू 10। तो हमारा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 10। ओके, हियर लुक, सी इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10। ओके ओके, then after printf insert the small bracket within an inverted comma after swapping a equal to %d and b equal to %d slash n, then comma a comma b, then our small bracket will close, then semicolon, then after our curly bracket will close. Okay, this is the code for swapping of two numbers using third variable method. ओके, जो हमारा आउटपुट आया है, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग का, देखिए इनिशियली हमारा ए इक्वल टू 10 था, अब बी इक्वल टू 20 था। ठीक है, तो उसमें गिवन ये था कि, ठीक है, ये हमारा स्वैपिंग का था, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। देखिए ए की वैल्यू को सी को असाइन किए तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी इक्वल टू 10, और बी की वैल्यू ए को असाइन किए तो कितना आ गया, ए की वैल्यू ए इक्वल टू 20। ठीक है, और हमारे सी की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू 10। ओके, दिस इज द आउटपुट फॉर द swapping of the two number using third variables. Okay, our next program is swapping of two number using third variable method second. Okay, जैसे कि हमारा कोड है हैज़ इंक्लूड studio.h. studio.h means to say standard input and output header. Okay, then after we write int main function. Then after inside the curly bracket, int a equal to 10, b equal to 20, comma c, then semicolon. In new line, printf inside the small bracket within inverted comma before swapping. Before swapping, a equal to %d and b equal to %d, then slash n. Slash n used for new lining in the output. Okay, then after comma a comma b, then our small bracket will close, then semicolon. Okay, in new line, c equal to a plus b, b sorry, c equal to a plus b, then semicolon, a equal to c minus a, then semicolon, b equal to c minus b, then semicolon. ठीक है, as we know that a equal to 10 and b equal to 20, so the value of c will be 30. Okay, then a equal to c minus a, the value of c is 30 and the value of a is 10, then 30 minus 10 is 20, equal to 20. Okay, and b equal to c minus b, b equal to c minus b. ओके, देखिए as we know the value of c is 30 and the value of b is 20. 30 minus 20 is equal to 10. Okay, so we can say that a equal to 20 and b equal to 10. Okay,
Uh, After that, printf inside the small bracket within inverted comma after swapping a equal to percent %d and b equal to percent %d slash n, then comma a comma b, then our small bracket will close, then semicolon. After that, our curly bracket will close. Okay. Our output will, before swapping a equal to 10 and b equal to 20. Okay. After swapping a equal to 20 and b equal to 10. Okay. This is the output for the swapping of the two numbers. Okay. Using variables. Okay. Using third variables. Okay. Our next program is swapping of two number without third variable. जैसे कि हमारा कोड है हैज़ इंक्लूड studio.h. studio.h means to say standard input and output header. Okay. Then after int main function inside the curly bracket int a equal to 10 comma b equal to 20, then semicolon. Okay. In new line, printf inside the small bracket within an inverted comma before swapping a equal to percent %d and b equal to percent %d slash n used for new lining in output. Then after comma a comma b, then small bracket will close. Then after we write semicolon. In a line a equal to a plus b, then semicolon, b equal to a minus b semicolon, and a equal to a minus b semicolon. Okay. In new line, printf inside the small bracket within an inverted comma after swapping a equal to percent %d and b equal to percent %d slash n, then after comma a comma b, then our small bracket will close, then semicolon. After that our curly bracket will close. Okay. This is the code for swapping of two number without third variable. Okay. Here, as we know that a equal to 10 and b equal to 20. Okay. So a equal to 10 plus 20 is equal to 30. Okay. And b equal to a minus b. ओके. तो हमारी ए की न्यू वैल्यू कितनी आई है 30 आई है और बी की वैल्यू कितनी है 20 है. 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10. ओके. देन आफ्टर ए इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है. तो हमारे ए की वैल्यू जो आई थी कितनी आई थी 30 और हमारे बी की वैल्यू जो न्यू आई है कितनी आई है 10. 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20. Okay. A equal to 20 and B equal to 10. Okay. Our output will come before swapping A equal to 10 and B equal to 20. Okay. After swapping A equal to 20 and B equal to 10. Okay. This is the output for the swapping of the two number without using third variable. Okay. Our next program is input marks of 5 subject like math, physics, chemistry, Hindi, English and find average. Okay. जैसे कि हमारा कोड है हैज़ इंक्लूड studio.h. studio.h means to say standard input and output header. Then after we write int main function, then inside the curly bracket float p comma c comma m comma h comma e comma average, then after semicolon. In new line, printf inside the small bracket within inverted comma enter marks in physics slash n. Slash n is used for new lining in output. Okay. New lining in output. Okay. Then after our small bracket will close,
then semicolon. After that, scan up inside the small bracket within inverted comma %f, then after comma, then ampersand p. Then our small bracket will close, then semicolon. Okay. After that, printf inside the small bracket within inverted comma enter marks in chemistry /n. Then after small bracket will close, then semicolon. Okay. In new line, scan up inside the small bracket within inverted comma %f, then comma, then ampersand c. Then our small bracket will close, then semicolon. Okay. After that, printf inside the small bracket within inverted comma enter marks in math, then /n. Then our small bracket will close, then semicolon. In new line, scanf inside the small bracket %f. %f is denote the float value. जो हमारा %f है किसको डिनोट करता है? फ्लोट वैल्यू को डिनोट करता है. ओके. देन आफ्टर ampersand m. ओके. Then semicolon. After that, printf inside the small bracket within inverted comma enter marks in math. हो गया हमारा. इसमें लिखेंगे enter marks in हिंदी, then /n, then our small bracket will close, then semicolon. In next line, scan up inside the small bracket within inverted comma %f, then comma, then ampersand h. Then our small bracket will close, then semicolon. In new line, printf inside the small bracket within inverted comma enter marks in English, then /n, then our small bracket will close, then after we write semicolon. Next, scan up inside the small bracket within inverted comma %f, then comma ampersand e, then after semicolon. ओके. अब देखिए, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट p + c + m + h + e divided by 5. एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट. ओके. Then after printf inside the small bracket within inverted comma average of result is equal to %f. Then after comma average, then small bracket close, then semicolon. After that our curly bracket will close. Okay. This is the code for input mark of 5 subject like physics, chemistry, math, हिंदी, इंग्लिश एंड उसका क्या है? योर एवरेज कोड है. ठीक है, 5 सब्जेक्ट का इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ओके. आवर आउटपुट विल कम इन इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट इज इंटर मार्क्स इन फिजिक्स मान लीजिए 45 है, इंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री 65, इंटर मार्क्स इन मैथ 87, इंटर मार्क्स इन हिंदी मान लीजिए 75 है, इंटर मार्क्स इन इंग्लिश 94. जब हम एवरेज मार्क्स लेंगे, एवरेज ऑफ रिजल्ट, तो हमारा कितना मार्क्स आ जाएगा? 73.19. ये हमारा एवरेज ऑफ रिजल्ट है. ओके.